हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मी चाणक्य शुक्ला। और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं वापस अपने चैनल पर जिसका नाम है चैंक आर्ट्स। आज हम कोई म्यूजिकल डिस्कशन करने वाले हैं जो कि मेरे को लगा काफ़ी ज़रूरी है। और आप लोगों को ये काफ़ी, सभी म्यूजिशियंस जितने हैं उनको काफ़ी हेल्प करने वाली है आज की डिस्कशन। तो क्या करने वाले हैं हम, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कितने लोग जो फ्लूट बजाते हैं या फिर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका फिक्स्ड स्केल होता है। सबसे पहले हम स्केल को डिस्कस करेंगे। ओके, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज सर्कल ऑफ फिफ्थ्स, और उसके बाद हम स्केल डिग्रीज के बारे में बात करेंगे। और फिर मैं इस वीडियो के एंड तक आपको ये बता दूंगा कि कैसे आपको किसी सॉन्ग में अगर अपनी फ्लूट प्ले करनी है तो फिर फ्लूट कौन से स्केल की आपको यूज़ करनी है उस सॉन्ग के लिए, राइट। क्योंकि रिसेंटली मेरे को पता लगा, मेरा एक स्टूडेंट है और ही इज़ रियली स्ट्रगलिंग टू फाइंड आउट द फ्लूट परफेक्ट स्केल फ्लूट फॉर द सॉन्ग ही वांट्स टू प्ले। तो उसके पीछे सीन क्या है, चक्कर क्या है, मैं बताता हूँ आपको। चक्कर पता लगेगा आपको सर्कल ऑफ फिफ्थ से, राइट। तो लेट्स स्टार्ट इट विद समथिंग लाइक दिस। आई होप आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्केल डिग्रीज की, राइट। स्केल है क्या, कई लोगों को इसी में ही अभी कंफ्यूजन है that what is actually a scale, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ नोट्स हैं और मैंने सपोज कीजिए सी मेजर स्केल लिया है एग्जाम्पल के तौर पर। आप इसके बदले कोई और भी मेजर स्केल या माइनर स्केल ले सकते हैं। स्केल के अंदर होता क्या है, जैसे सरगम होती है सारे गामा पाधा नीसा, वैसे ही हमारे पास 8 सुर होंगे जिसमें फर्स्ट नोट को हम कहते हैं टॉनिक, जो कि स्केल का टोन डिसाइड करता है, टोन बताता है हमको। उसके बाद आता है सुपर टॉनिक, जो कि 1 डिग्री अप है टॉनिक से, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सुपर टॉनिक। फिर आता है मीडियंट। इसको मीडियंट क्यों कहा जाता है? मीडियंट जैसा नाम कहता है कि इट शुड बी समवेयर इन मिडल, बट इट इज़ नॉट इन मिडल। मिडल में तो कुछ और है, बट इट इज़ इन द मिडल ऑफ डोमिनेंट एंड टॉनिक, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मीडियंट नोट। 4th डिग्री है हमारे पास सब डोमिनेंट, एज द वर्ड सेज इट इज 1 डिग्री लोअर than the dominant, that's why it is called subdominant. Then we have dominant. So सारे गामा पा जैसे कहते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि पंचम सुर में बात करी तो जो सरगम है उसके अंदर जो 5वां सुर होता है, that plays a very dominant role in the scale. That's why the fifth note, 5th degree in the scale is called the dominant. Moving on, submediant. So why it is submediant? Submediant as just, अगर हम सब डोमिनेंट को देखें तो फिर इट शुड बी coming before mediant, but that's not the logic here. Logic is mediant is in the middle of tonic and dominant, that's why it is in the middle, and submediant it is in the middle of subdominant and the tonic, that's why it is called submediant, right? Okay, moving on, leading tone, जो कि 7वां सुर है सरगम के अंदर, सारे गामा पाधा नी। it why it's called leading tone? Because it leads to tonic. अगर मैं आपको नी पे छोड़ दूं तो आपको पता लगेगा जब तक कि सा नहीं आएगा। सा रे गा मा पा धा नी सा, इट गिव्स अ कंप्लीशन, राइट, दैट्स व्हाई इट लीड्स टू टॉनिक। तो ये डिग्री नेम्स हैं, ये मेजर स्केल्स पे भी लगते हैं, माइनर स्केल्स पे भी यू विल थिंक दीज डिग्रीज एज ऑफ द सेम थिंग। और इनके बारे में बात क्यों करें, क्यों हम सी डी ई एफ जी और उस तरीके से सी शार्प डी फ्लैट इस तरीके से बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दिस इज मोर साइंटिफिक वे ऑफ लर्निंग म्यूजिक देन लाइक अल्फाबेट्स, राइट। ओके, अब एक और चीज़ चेक करते हैं, काफ़ी पॉपुलर आपने ये सुना होगा, और जितने भी लोग ट्रिनिटी का फर्स्ट ग्रेड थ्योरी एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको भी पता होगा कि ये उनके कोर्स में आता है, सर्कल ऑफ फिफ्थ के बारे में पढ़ाई होती है। तो मैं आपको बताता हूँ
अबाउट सर्कल ऑफ फिफ्थ्स। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, जैसे जस्ट लाइक अ क्लॉक वी हैव ऑल दीज नोट्स, बेटर टू थिंक देम एज डिग्रीज। ओके, सो अगर हम सी से स्टार्ट करते हैं, मैं आपको समझाने के लिए, ओके, राइट। तो ये हमने कर लिया है सेटअप, और wait a minute, uh, don't know, yeah, that's better. ओके, तो हम सारे अब सुरों को एक बार काउंट करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सुर, लेट्स कीप इट सी, जो कि हिंदी में सा होता है। तो पहला सुर मैं लेता हूँ, और हम पांच पांच सुर आगे बढ़ेंगे। सी डी ई एफ जी, सो पांचवा सुर जो आ रहा है हमारे पास जी। तो यहाँ पे अगर हम क्लॉकवाइज बढ़ते हैं तो सी के बाद हमने चूज किया जी को, करेक्ट। ओके, मूविंग ऑन, तो हमने यहाँ पे जी प्लेस कर दिया। नाउ काउंटिंग 5 नोट्स फ्रॉम जी, तो हमारे पास आता है डी नोट, दैट्स व्हाई इट इज डी हियर। देन मूविंग ऑन फ्रॉम डी, दिस इज ए, दैट्स व्हाई यहाँ पे हमने ए को लिखा। ए जिसको हिंदी में कहते हैं धा, या आगे बढ़ते हैं धा से 5 सुर आगे, यह है गा। गा इंग्लिश में कहेंगे इसको ई, यहाँ पे वी हैव ई। मूविंग ऑन फ्रॉम ई, ये है बी, तो हमने यहां लिख दिया बी। देन बी के बाद दिस इज एफ, तो यहां पे हमने, दैट्स व्हाई कीपिंग द डिग्री इन माइंड वी हैव गिवन इट एफ शार्प, एंड नाउ ऑन विल हैव ऑल द शार्प्स। एफ के बाद we have C, to be precise C sharp. We have G, or we can say G sharp. Moving on, और किसी भी ऑक्टेव पे G के आगे बढ़ते हैं। Again we'll have D, but D sharp. Moving on from D, we'll have A or A sharp. Moving on from A, we have E, or we can say E sharp. Now इस पे कई लोग डिबेट करेंगे कि ई शार्प तो कुछ होता ही नहीं है, पर चलो ई से भी आगे बढ़ते हैं, इस पे बात करेंगे बाद में। अब हमारे पास आया बी, और इसके हिसाब से हम कह सकते हैं उसको बी शार्प, राइट। ओके, सो लुकिंग इनटू द सिचुएशन, अगर आपको ये पता ही है पहले से तो मैं बताऊं,
कि बी शार्प इज नथिंग नथिंग बट सी, या बट हम उसे यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि इंस्टेड ऑफ बी शार्प हम सी ही बोल लेते हैं उसको। और इंस्टेड ऑफ ई शार्प इज नथिंग बट एफ, तो उसको हम एफ ही बोलते हैं इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट एन ई शार्प। ओके, दो देर आर कॉन्सेप्ट्स ऑफ डबल शार्प्स, ट्रिपल शार्प्स आल्सो, बट बेसिकली अगर आपको डिग्री का नाम पता है तो आप उसी को यूज़ करते हो। सो नाउ वी हैव सी, जी, डी, ए, ई, बी, which is also called ओके। अच्छा, मैं फ्लैट्स में ही बात करूँ यहाँ पे, तो एफ शार्प इज ऑल्सो कमिंग बैक टू दिस, या so F sharp is also called G flat, so that's correct. C sharp is also called D flat. G sharp is also called A flat. D sharp is also called E flat. A sharp is also called B flat. And E sharp is also called F. B sharp is also called C. यहाँ पे एक बार हम confusion create जो हो गई है उसको clear कर लेते हैं. So from E we'll have B. बी, जिसको सी फ्लैट भी बोल सकते हैं, राइट, विद रिस्पेक्ट टू डिग्रीज, बट हम कभी सी फ्लैट कभी यूज करते नहीं। सी फ्लैट मतलब 1 डिग्री। सो एक बार मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ और क्लियर कर देता हूँ। फ्लैट्स एंड शार्प का सीन ये है, शार्प मतलब अगर आप शार्प्स के तरीके से देख रहे हैं तो फिर यू विल ऑलवेज लुक फॉर द नेक्स्ट डिग्री देन द नोट यू आर रेफरिंग टू। और अगर आप फ्लैट्स में देख रहे हैं तो यू always look for the previous degree from the note you are referred to. Okay, so that sharp sign and flat sign is a different way, that's just a representation, but basically to look into the notation, only the differences of the perspective, how you're looking into it. You're looking the next note or you're looking into the previous note, though the thing is same, like C sharp and D flat is the same thing, D sharp and E flat is the same thing, and so on. Here on the circle you can see that clearly, right? ओके, अब इस सर्कल का फायदा क्या है? ये सब तो आपको कॉन्सेप्ट पता लग गया। नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट स्केल डिग्रीज, ऑल्सो वी डिस्कस द सर्कल ऑफ फिफ्थ्स, राइट। लेकिन अब इसका फायदा क्या है? तो मैं फायदा आपको ये बताता हूँ कि अब आप देखें, पिकअप एनी नोट, तो एनी नोट के चलते हम सी मेजर को ही लेते हैं, सी नोट को लेते हैं जो ऊपर है, बी शार्प और सी, or whatever you prefer to call it, just call that. So I call it C, I'll call it a C. Then from C, imagine आप C मेजर कॉर्ड लेते हो, okay, तो to you can derive the chord family from this circle of fifths. Alright, मैं आपको यही चीज़ गिटार में भी समझाने की कोशिश करता हूँ। I'll get my guitar. Wait. गिटार का साउंड आएगा नहीं. Let's keep it on the MIDI keyboard. Okay, let's get back to that one. Yes. Clear? You can see the keyboard? Right. So, C major, जिसकी कीज हैं C, C, E, C, E, G. ऊपर भी आप देख सकते हो. या हाँ, अब जब मैं कॉर्ड प्ले करूंगा तो यू कैन इवन सी द कॉर्ड इंफॉर्मेशन at the top of the dot. So C chord.
सो दिस इज सी मेजर, ओके। इसके रिलेटिव मेजर्स हैं। अब आपको सी कॉर्ड बजाना आ गया, अब आप उसको यूज कैसे करोगे, ठीक है। तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि सी मेजर की रिलेटिव मेजर्स हैं। जब आप कॉर्ड के सर्कल ऑफ फिफ्थ में देखो, लेफ्ट में कौन है, लेफ्ट में सी के आता है। लेफ्ट आई मीन टू से, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाते हो तो आपको मिलता है एफ, और अगर क्लॉकवाइज जाते हो तो जी। एडजेसेंट जो नोट्स हैं वो रिलेटिव मेजर्स हैं ऑफ योर की। सो अगर आपकी सी की है तो स्केल से मिलते जुलते एफ मेजर और जी मेजर भी सिंक करेंगे। सी, एफ मेजर, जी मेजर, बिल्कुल सिंक कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। ये दिखाता हूँ एक, राइट। कूल, गॉट इट। अच्छा, ये तो है मेजर, रिलेटिव मेजर्स। अब आप कभी कंफ्यूज हो जाएं कि मेरे को कोई सॉन्ग मिला और फिर वो पता नहीं उसके आगे पीछे कॉर्ड्स क्या है, तो फिर आप सबसे पहले, अगर कोई म्यूजिशियन आपके साथ परफॉर्म कर रहे हैं, इमेजिन एक रैंडम जैम चल रहा है, आप अपना इंस्ट्रूमेंट लेके आते हो, मे बी आपके पास गिटार है या फिर कीबोर्ड है, चलो सपोज करो गिटार ही है। तो आप सबसे पहले पूछेंगे कि आपका सॉन्ग जो है किस की के अंदर है। की मतलब, की मतलब जैसे अभी हमने देखा था, सी को हमने की माना तो उसके रिलेटिव मेजर्स पता लगे। मेन मेन कॉर्ड जो है आपकी मेजर कॉर्ड, मेन मेजर कॉर्ड, दैट इज योर की। कई बार उसको माइनर में भी बोलते हैं, लेकिन उस पर भी हम आते हैं कि कैसे उसको पता लगाएंगे। ऑलराइट, तो मेजर कॉर्ड आपको पता लगा, सी मेजर, उसके रिलेटिव मेजर्स हैं एफ एंड जी। अब कुछ और सिचुएशन देखते हैं। मान लीजिए किसी ने कहा कि डी मेजर है उनका स्केल, तो डी मेजर आपको आती है कॉर्ड, कॉर्ड्स आपको सारी आती है, लेकिन कहाँ कौन सी यूज करनी है, दैट इज द थिंग, ओके। तो डी मेजर, ये आपकी बजाई हमने डी मेजर, सी, दिस इज डी मेजर, जिसमें नोट्स है डी, एफ शार्प एंड ए, ओके। ऊपर भी आप देख सकते हो डी कॉर्ड लिखा रहा है, राइट, यहाँ पर, राइट, ओके। अच्छा, डी कॉर्ड आपको पता लगे कि गाना डी में है, पर उसके साथ कौन कौन सी, ये क्या हो गया गूगल को। Dude, calm down, calm down, calm down. What? Anyways, coming back. Okay, Google doing something random, कुछ भी चल रहा है उस पर। ओके, सो आपका सॉन्ग है अगर डी मेजर पर, सो आपको यहाँ पे व्हाट यू कैन सी फ्रॉम द सर्कल ऑफ फिफ्थ, एडजेसेंट कीज हैं जी एंड ए, राइट। तो डी मेजर की एडजेसेंट जो कीज हैं, तो वो उसकी रिलेटिव मेजर कॉर्ड्स है। दैट मीन्स अगर मैं डी बजाता हूँ तो इसके साथ जेल करेंगी दो कॉर्ड्स, जी मेजर एंड ए मेजर। जी मेजर, ए मेजर वुड बी, ओके। एक बार कॉम्बिनेशन बजा के दिखाता हूँ, इट विल साउंड गुड।
या वाज़न्ट दैट गुड? ओके, बहुत ही कॉमन से एग्जांपल लिए मैंने। कुछ पेचीदा एग्जांपल लेना है तो वो भी देख लेते हैं। जैसे कि अगर किसी ने आपको कहा कि द सॉन्ग इज इन डी शार्प, ओके, डी शार्प के ऊपर है। तो डी शार्प, आप देखो डी शार्प की एडजेसेंट कॉर्ड्स हैं ए शार्प एंड जी शार्प। यहाँ पे हम डी शार्प लेकर के देखते हैं। माइंड दैट डी शार्प इज ऑल्सो कॉल्ड ई फ्लैट। सो okay, this is E flat. Okay, E flat. So yeah, I call it D sharp, but this software is also calling it E flat. E flat अगर आपका की है तो रिलेटिव मेजर कॉर्ड्स हो जाएंगी बी फ्लैट एंड ए फ्लैट। सो ई फ्लैट इज देयर, relative major chord B flat. B flat would be okay. This is minor. This is B flat major. Isn't it? Isn't it sinking? Okay. Next is A flat. A flat यानी कि G sharp. A flat. E flat. And then coming back to D sharp, which is E flat also. Okay. Yeah, wasn't that cool? So अभी तक आपको पता लग गया कि अगर आपके पास की है सॉन्ग की कौन सी की है तो आपको पता लग जाएगा। उसके साथ साथ मेजर कॉर्ड्स जो हैं क्या कौन कौन सी आपको प्ले करनी होगी, दैट यू कैन डिराइव फ्रॉम द सर्कल ऑफ फिफ्थ्स। ओके, सो ये तो हुआ मेजर का। हाउ अबाउट माइनर कॉर्ड्स? रिलेटिव माइनर्स क्या होते हैं कॉर्ड फैमिली के अंदर? और एक माइनर कॉर्ड तो होती नहीं, देयर आर मोर। सो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सो टुडे आई गिव यू लाइक मेजर कॉर्ड, रिलेटिव मेजर्स कौन सी हैं और रिलेटिव माइनर्स कौन सी हैं। टू फाइंड आउट दैट, लेट्स कम बैक टू सर्कल ऑफ फिफ्थ्स। ओके, एज यू कैन सी इन दिस वन, मान लीजिए we our key is C and adjacent keys हैं F and G. So obviously with C, F and G will go. Now if you want to find the minor chord, relative minor, so what you have to do, you have to go clockwise, 3 steps clockwise, like from C to G, G to D, D to A, like 1, 2, 3. So A minor will be the relative minor of C major. यहाँ पे एक चीज I want to make sure that C minor, आपको chords सारी आती है, that's really cool, you know all the chords, but how to use when and where, that is what we are learning today. All right, so C minor is not the relative minor of C major, right? Make that sure. कभी ये ब्लंडर मत करना, कभी मत बजा देना ऐसे, बहुत बेसुर हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ साउंड कैसे करता है। ओके, सी मेजर
wait. C major, C minor, is C minor, is C major. Okay, so रिलेटिव माइनर नहीं है वो उसका. रिलेटिव माइनर क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ. सी मेजर का रिलेटिव माइनर है ए माइनर. ओके, लेट्स सी दैट प्रॉपर्ली. सो एक बात पता लगी आपको, जस्ट बिकॉज नेम इज द सेम डज नॉट मीन दैट दैट थिंग इज रिलेटिव माइनर ऑफ दैट थिंग. ओके, like C major, C major's relative minor is not C minor. Okay, got that clear? C major. Now I, according to the circle of fifths, dropping down three steps down, C to G, G to D, D to A. Okay, so C major relative minor would be A minor. Let's play that. C major, A minor. Now there are further A minors relative minors. What are the, if A is a minor key for C major, then what are the relative minors for the scale? What we'll do, adjacent keys of A, which is D and E, they are first and second relative minors or third relative minors of this thing. So if we play relative minors, C major's relative minors is A minor, and A minor's relative minors are D minor and E minor, because adjacent keys are D and E. तो फिर A minor के बाद D, E minor and D minor. सुनो कितना अच्छा लगता है ये सुनने में. Got it? A minor, E minor, D minor, and E minor. These are relative minors in the C key. Okay, or sometimes song के अंदर if C major is not being used, so they simply call it A minor. Okay, one more time. Let me clear that. Sometimes, mostly, if you search on, if you Google, okay, Google gives you the results, but not always. They are not customized, right? They are just general results that people search on the basis of that, right? But if you are not looking for that, it will anyhow will give you that. So if you are looking for the chords of a song, so generally the key they will give you that only the minor key. Okay, for example, if you heard this rolling in the deep song, it is in C minor scale. Okay, and so in the song there is no major key written. So how will you find the C minor major key of that thing? So let's come back. Let's come back to this thing. Okay, so C minor would be again C, but this is treated as minor. So if you'll go three steps anti-clockwise, like 1, 2, and 3, then you will find the relative major of that minor. So relative major for C minor is D sharp major, or you can say E flat major, right? Got it? All right. Now, so this concept is clear. How we'll find? Let's come up with one more example. One more example. If your song is E minor, okay, then how will you find the relative major? Relative major for E minor is, go
Anti-clockwise, three steps: one, two, and three. G major. So G major is relative major for E minor. Cool. And if you want relative minor of a particular key, so if you are in, suppose you are on F major and you want to know what is the relative minor, go clockwise three steps: one, two, three. So it is D. That means F major's relative minor is D minor. Clear till here? Yeah. Okay. Cool. Right. Okay. Moving on. Never do such a blunder. Okay. Now how to pick a instrument which has fixed scale. Like in a guitar, you can play any scale, right? But you cannot do that with every instrument. Like in a flute, it has a fixed scale. A flute का fixed scale होता है. Same goes with mouth organ and flute-like instruments tim maybe शहनाई. There are so many instruments जिनमें multiple scales नहीं बजा सकते. एक fixed scale आता है, right? So what you have to do with such instruments, you have to keep a collection of all of them, like in different scales. Like if you are playing mouth organ, so you will keep mouth organ of all the scales, because you never know which scale you're going to play. If you're playing piano, if you're going to play flute, then you have to keep flute or a recorder or any instrument like that of all the scales: C, C sharp, D, D sharp, E, F, F sharp, G, G sharp, A sharp, B, all of them, right? You have to keep the whole collection with you. And that too with like alto, soprano, bass, all collection you have to keep with respect to octaves also, right? Now, what you have to do, there are no major scale instrument and minor scale instruments, though there are some um, in folk, but in classical music, there's a fixed scale, right? And mostly in the flute that you're going to buy, it has a fixed scale. Like it will be written a C, simply a C over it. That means your flute is in C scale, C natural major scale. And you're going to buy a mouth organ, it is C written on it. That means it is on C natural major scale. uh, and for any other scale also, maybe A sharp or B or anything written on it. Now what you're going to do, if your song is in F sharp minor, suppose your song is in F sharp minor, so which flute you're going to pick up? So this thing happened with my student and we discussed it for like hours, because yeah, it is a good discussion. What my student did, he picked up on an F minor song, he picked up F minor flute, and the song did not go well with it. Yeah, it was sounding very basura. Why? Can you tell me the mathematical reason behind it? So, coming back to circle of fifths. Yeah. So F sharp, see, F is here. F sharp would be here. Yeah. See, it is at the different location. So at 6 o'clock we have F sharp, right? Now on F sharp minor, okay, you cannot play F sharp major scaled flute, right? To play this thing, you have to play the relative major chord, relative major scaled instrument. To find that, what you will have to do, just the tarika which I have told you already, go anti-clockwise three steps: one, two, three. Yeah. So to play a song scaled at F sharp minor, you will use a flute scaled at A major. Why? Because F sharp minor's relative major is A major, and vice versa. That means A major's relative minor is F sharp minor. ये बात आई आपको सबको समझ, right? So very tricky but very helpful. You're going to thank me later about this. Okay, one more thing. Let's do one more example of that, right?
सपोज अगर आपका गाना है ए माइनर स्केल पर, तो क्या आप सीधा ए फ्लूट बजाना शुरू कर दोगे? नहीं। आपको, अगर आपके पास सारी फ्लूट्स हैं, तो यू हैव टू पिक अप सी मेजर, आपको चूज करना है। तो फिर ए माइनर पे है, तो फिर गो 3 स्टेप्स एंटी क्लॉकवाइज बैक, लाइक 1 2 3, सी मेजर, राइट? गॉट इट? या? ओके, वन मोर थिंग। पहले मेरे को ये चीज अच्छे से नहीं पता था, आई यूज टू कॉल दिस थिंग अ कॉर्ड व्हील, बट अभी मैं आपको बताता हूँ दैट इज नथिंग else but a circle of fifths. I'll get it. Wait. So this thing out there, somebody in the comments asked me, what is it? ये क्या है? In what you are showing this thing. So this is nothing else but the circle of fifths. This is the same thing. Okay. So if you look at the inner circle, this is the same thing. C, relative majors, circle of fifths. Let me compare this thing. Yeah, you can see it's the same thing. So at the top we have C, then moving on clockwise C, G, D, A, E, B, F sharp, C sharp, and so on. And same thing is here also. If you keep this thing at the top, we have C, and maybe it will be opposite for you guys to watch because it will be mirror effect, but you can get it. That C, after that we'll have G and D, A, E, B, G, D flat, A sharp, right? And so on it is written. Now, what modification they have done to the circle of fifths, that you can also find, see, if you want to know the relative minor of C major, so you'll go 3 steps down, like 1 2 3, which is an A minor. Okay, so they have just automatically they have put it this A minor over here, right? And relative minors of A minor, which is D minor and E minor, they have written it here, E minor and D minor, right? And this comes with this degree of B. See, there is B written, B degree. So if you also see this one, B sharp degree, right? Because it's coming from that degree. That's why they have mentioned that also there. Okay, so this tool is quite handy, but how to make it वो मैंने आपको बता ही दिया कैसे बनाना है उसको. ओके, जस्ट आप एक इसको सबसे पहले एक सर्कल बनाइए, उसको घड़ी की तरह 12 भागों में ऐसे डिवाइड कीजिए, कीप सी अबव, और उसके बाद 5 5 स्टेप आपको आगे जाना है, क्लॉकवाइज इसको लिखते रहेंगे, एंड आपका सर्कल ऑफ फिफ्थ तैयार हो जाएगा. एंड इन दिस वीडियो मैंने आपको बताया कैसे कॉर्ड फैमिली में रिलेटिव मेजर्स आपको पता लगेंगे, एडजेसेंट एंड रिलेटिव माइनर्स पता लगेंगे. तो अगर कोई सॉन्ग आपको पता लगता है ए माइनर में, राइट, तो फिर आप सी, वो जो एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, एफ शार्प माइनर पे था, वो एफ शार्प माइनर पे सॉन्ग था, राइट. ये देखो, एफ शार्प माइनर पे है, तो आपको फ्लूट ए का पिक करना पड़ेगा, जिसमें कि आपके रिलेटिव मेजर्स भी इंक्लूड होंगे, और आपकी मेन की जो है वो ए होगी, नॉट एफ शार्प. एफ शार्प अगर आप चूज करोगे, एफ शार्प नीचे लिखा नहीं, ये यहाँ लिखा है, यस, तो उसका रिलेटिव माइनर ई फ्लैट माइनर है, यानी कि डी शार्प माइनर, राइट. तो बिल्कुल बेसुरा लगेगा, वो अलग स्केल है. सी और सी शार्प ही अलग लगते हैं, तो फिर वो तो बहुत दूर की बात है, एफ शार्प एंड ए तो, राइट. सो आई होप आपको ये समझ आया होगा कॉन्सेप्ट, and it was really fun discussing circle of fifths, degrees, and how to pick up a fixed scale instrument, suppose flute or anything for that thing, right? Or it was fun discussion,
and I really love talking about this thing. मेरे पास I really appreciate जितना भी टाइम आपने मेरे को दिया है इस समय इस वीडियो में, हम ऐसी बातें ऐसी चर्चाएं करें, और इससे बहुत अच्छी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, एंड लेट्स कीप such conversations on out there on social media as well, right? Okay, it's fun. Like always, spread love, spread music, and this is me, Chanaki Shukla. I'm signing off. I'll see you in the next one. Till then, take care. Bye bye. See ya.